Hello, Namaskar, Vanakkam, New Year greetings for 2023 to all our lovely students, their parents, their grandparents, and to fellow educators. Let me first announce the results of the first SWS Pariksha, which we conducted on the 1st of January 2023. 694 students took this examination. Let me be honest, I was disappointed with the numbers because I thought साल का पहला दिन है, संडे है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन होगा कि हम मेहनत करेंगे आज से. सभी बच्चों के विंटर वेकेशन चल रहे होंगे अभी, राइट? It was not a 2-hour examination, it was only 45 minutes, though the average time taken by the students was between 30 and 31 minutes, right? There was no entry fee, there was no admission fee, yet I thought more students should have taken this examination, right? Maybe when things are offered free, uska koi value nahi rehta hai, right? That's one of the lessons I've taken from this experience. Please remember, it takes a lot of time and effort to prepare a paper, right? Because we don't pick up यहाँ से 4 questions इस किताब से निकाल लिए, ये 4 questions इस YouTube channel से निकाल लिए, उस तरह का काम हम नहीं करते हैं. We write all the questions ourselves, right? Anyway, 19 out of those 694 students scored 80 on 80. Okay, but sorry to say 8 of those 19 students were repeaters. What I mean is, और ये मैंने उस पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि अगर आपके एक बारी के अटेम्प्ट में कम मार्क्स आते हैं, आप फिर से उसको अटेम्प्ट मत कीजिए in order to improve your score. But despite my saying so, there was 8 students who have scored 80. There may be more students, but who have scored less, say in the 60s or in the 70s, and then they have repeated the examination in order to get an 80. There is one student who has got, I think, 76 in the first attempt, then 79 in the second attempt, and then the student has given a third attempt in which he or she has scored 80 on 80. Automatically, the software disqualifies. Okay, it does not, it kind of indicates that such and such student has done something like that. Okay, so sorry to say, that's the way it is. Those are the rules of the examination. See, the idea of the examination was basically to give you a reality check. Like a parent wrote to me this morning saying that Hassan has done pretty well in the examination. He's enrolled into 3 of our courses, physics, chemistry and mathematics. So that's what we wanted, for the parents and the students to know कि अभी what is the position, अभी कितना मेहनत करने की ज़रूरत है. Another student wrote that, you know, she has done well in all the subjects except chemistry. So she now knows that, okay, chemistry needs a little bit more attention. So that's what we wanted you students to get some kind of an idea. It was a moderate examination, and I would say that if you have scored 68 and above in this examination, you are in good shape, because अभी आपके पास 7 हफ्ते का समय और है in which you can do a lot more improvement in your score. So 68 and above in this kind of an examination, according to me, is a decent score. So there is no need to feel disappointed if you have got a 72 or a 74. Okay, that's what I would say. So after disqualifying the repeaters, we have 11 students who have scored 80 on 80. Okay, and I've written the names on these chits, individual chits पे यहाँ पे रखा है, and I will pick up 3 names out of these 11, right? And SWS will work with them in order to kind of see in what way we can help and support them at this stage in the last 3 months journey of your board examination. So मैं शुरू करता हूँ इसमें से. Let me just shake it once again. Okay. The first name is Anya. I hope you can see the name out there. Okay, let me shake it again. The second name is Arjun Samant. Samant hai, Savant hai, I'm not sure. I think it's Samant. Okay. The third name is Daniel. I hope the name is showing on the screen. So these are the 3 students with who I would request all 3 of them to get in touch with me on the SWS chat, and we will take it from there about these students. But as I said, nothing to feel despondent. We'll see if we can do more of these examination, but otherwise there are the SWS test papers which are there on the app, which are very comprehensive, lots of papers, lots of
question and answers with answer key, which will give you an idea about where you are placed, both MCQs as well as subjective question papers. So let's go ahead. Congratulations to all of them. Now for the January strategy. Okay, now many of you will be having your pre-board examinations at your school this month, right? And frankly speaking, this is not the month to make a strategy. जनवरी का महीना है फाइन ट्यूनिंग का. अगर आप एक मैकेनिक के पास जाएंगे, एक अच्छा मैकेनिक आपको यही कहेगा कि मैं इस इंजन को फाइन ट्यून कर देता हूं. सो माय अटेम्प्ट इज टू फाइन ट्यून योर प्रिपरेशन इंजन राइट नाउ इन द मंथ ऑफ जनवरी. ओके, तो इस बात को ध्यान से सुनिए. तो अगर आपके प्री बोर्ड्स हैं इस महीने, अगर आपके प्री बोर्ड्स लेट्स से शुरू हो रहे हैं फ्राइडे को 6 तारीख को और चल रहे हैं लेट्स से 18 तारीख तक, राइट? सो 19 तारीख से आपको इस स्ट्रैटेजी को अपनाना है. अगर आपके प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं रिपब्लिक डे के बाद, then you have the entire January practically to do this, put this into practice. So it depends on when your pre-board examinations are. आप pre-boards पर focus कीजिए, उसकी जितनी तैयारी करनी है वो कीजिए. उसके बाद this strategy is what you need to put into motion. Now, in fact, we have given this plan in 2 of our courses. Our physics faculty, yes sir, has also suggested something like this. I would say divide your syllabus into 3 parts, and I call this the SWS plan. SWS plan. Okay. The first S is for strong chapters. S for strong. Okay. You have studied them before. आपने रिवाइज किया है. आपके हाफ ईयरली में या दिसंबर के प्री बोर्ड्स में उन चैप्टर में से क्वेश्चंस आपने बिल्कुल ठीक किए थे. So in that sense, you are in a good position as far as those chapters are concerned, right? आपने टेस्ट पेपर्स किए हैं तो you have scored well. तो अपना सिलेबस लेके सारा सिलेबस, जितने भी पेपर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, 10, 9, 10, 11, उन सभी के स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स सारे लिख लीजिए, राइट? W is for weak, is your weak chapters. स्ट्रॉन्ग का बिल्कुल ऑपोजिट एंटोनिम वीक चैप्टर्स. चैप्टर्स जिसको कि आप पसंद नहीं करते हैं, यू डिसलाइक. चैप्टर्स जो आपने पढ़े ही नहीं है या एक बारी बिल्कुल मन नहीं लगा के आपने पढ़े हैं. तो इन दैट सेंस योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर. आपने कोई टेस्ट पेपर्स नहीं किए हैं और रिवीजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है. ओके, इसको बेसिकली यू हैव बीन पोस्टपोनिंग स्टडिंग दिस चैप्टर्स फॉर द पास्ट 8, 9, 10 months, right? The second S, SWS, the third one is a so-so chapters, or let's say सुस्त chapters. Okay, एक बारी पढ़ा होगा लेकिन ठीक से नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है, थोड़ा आइडिया है लेकिन पूरी तरह से आइडिया नहीं है. ओके, टेस्ट पेपर्स शायद एक किया हो या आधा किया हो, छोड़ दिया हो, मन नहीं किया. ओके, स्कूल में भी इस चैप्टर को ठीक से पढ़ाया नहीं है. एक पीरियड में टीचर ने पूरा खत्म कर दिया, समझ में नहीं आया, राजधानी एक्सप्रेस की तरह निकल गई या बुलेट ट्रेन की तरह निकल गई, सर के ऊपर से निकल गई, कुछ समझ में नहीं आया, राइट? ऐसा भी काफी जगह पे होता है. सो दोज चैप्टर्स यू विल पुट इन दिस सुस्त कैटेगरी. So strong for those chapters which you have done very well. Weak, जो कि जिसके बारे में you know they are strangers to you. The third S is for the sust chapters, जो कि थोड़ा थोड़ा मालूम है लेकिन ज्यादा नहीं मालूम है. Okay, let me take the example of physics to make it clear. Your sound chapter could be in the strong category. I'm just giving an example. हो सकता है आपका ये सुस्त कैटेगरी में हो, बट हो सकता है साउंड में भी इन द स्ट्रॉन्ग कैटेगरी. आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन your light chapter is in the so-so category, सुस्त कैटेगरी. मालूम है लेकिन पूरी तरह से मालूम नहीं है. करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वीक कैटेगरी में है, बिजली के बारे में कुछ नहीं पता है. ओके, सो दैट्स हाउ यू डिवाइड योर थिंग. यू कुड इवन डिवाइड इट इनटू कैटेगरीज. हो सकता है कि एक कॉन्सेप्ट एक चैप्टर का आपको स्ट्रॉन्ग लगता है, बिल्कुल मालूम है, लेकिन उसी चैप्टर का दूसरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है या थोड़ा थोड़ा मालूम है या सुस्त कैटेगरी में है. सो यू हैव टू इंडिविजुअली डिसाइड. दोस्त ने ये लिखा है वही टेबल आप कॉपी मत कीजिए, आप अपना टेबल खुद बनाइए. सब्जेक्ट वाइज यू मेक योर ओन टेबल्स. ओके, लेट्स से एमओवी एक्ट 3 इज इन योर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी. तैयारी की है हाफ ईयरली के लिए, पहले प्री रिपोर्ट के लिए तैयारी की है, स्ट्रॉन्ग में है. एक्ट 4 इज इन योर सुस्त कैटेगरी. मालूम है ट्रायल सीन भूल जाता है, अरे मर्सी स्पीच वगैरह भूल जाता है, ठीक से याद नहीं रहता है, बसानियों ने बोला था या ग्राशियानो ने बोला था, भूल जाते हैं, राइट? दैट कैन बी इन द सुस्त कैटेगरी. एक्ट 5 बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ऑल दोस मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस, बिब्लिकल रेफरेंसेस याद नहीं रहते हैं, दैट इज इन योर वीक कैटेगरी. सो डिवाइड इट अकॉर्डिंगली. ओके, वंस यू डू दैट, you need to decide
I am now going to focus in the first week on the weak category. On the weak category, तो अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं, which I think जनवरी में तो पढ़ना पड़ेगा अगर पूरी तरह से आपके वीक कैटेगरी चैप्टर्स ज्यादा हैं तो, खास तौर पे, राइट? 6 घंटे में से 5 घंटे यू विल डिवाइड टू चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स इन द वीक कैटेगरी एंड 1 आवर इन ऑफ चैप्टर्स इन द सुस्त कैटेगरी. ओके, इन द सो कैटेगरी. स्ट्रॉन्ग कैटेगरी को पहले हफ्ते बिल्कुल टच मत करो, राइट? Try to convert maximum chapters from this weak category into the sust category by the end of week 1. Sunday to Sunday, Saturday तक ज्यादा चैप्टर्स आपके सुस्त में होने चाहिए, वीक में नहीं होने चाहिए, राइट? सेकेंड वीक में आप 5 घंटे या 4 घंटे यू गिव इट टू द सुस्त कैटेगरी. 1 घंटा, तब तक आई एम एज्यूमिंग कि आपके वीक कैटेगरी चैप्टर्स काफी कम हो जाएंगे, तो 2 घंटे आप वीक कैटेगरी चैप्टर्स को दीजिए. थर्ड वीक तक वीक कैटेगरी शुड बी कंप्लीटली गॉन. कोई भी चैप्टर वीक कैटेगरी में नहीं होना चाहिए. सुस्त कैटेगरी में हो सकते हैं, तो थर्ड वीक यू विल डू इन सुस्त कैटेगरी एंड बाय दैट टाइम योर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी विल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग, बिकॉज आपने सेकेंड वीक में सुस्त कैटेगरी चैप्टर्स भी पढ़े हैं, right? So your strong category chapter, so by the end of January or by the first week of February maximum, your everything, your 80 to 85% of your thing should be in the strong category and just about 10 to 15% in the so category, and weak category में नहीं होने चाहिए कोई भी chapters. Okay, so that's how you need to make that transition, and I want you to see the transition. आप you put it up on your wall कि ये chapters हैं, इस week में ये इधर चला गया है, right? You make your own flow chart so that you know, okay, this is the progress I am making. And I would request parents who are involved with the study schedule of their children also to monitor this. Okay, मेरे बच्चे का सर्कुलेटरी सिस्टम पहले हफ्ते में वीक कैटेगरी में था, सेकेंड वीक में इट हैज मूव्ड टू द सुस्त कैटेगरी, द सो कैटेगरी, एंड बाय द थर्ड वीक इट हैज मूव्ड इनटू द स्ट्रॉन्ग कैटेगरी. दैट इज प्रोग्रेस. ओके, एंड दैट शुड आल्सो रिफ्लेक्ट इन योर मार्क्स. पहले हफ्ते व्हेन यू आर डूइंग द वीक कैटेगरी चैप्टर्स, प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट टेस्ट पेपर्स. Attempt test papers only after week 2, after you have finished doing it in the second so category kind of chapters. Okay, so that's what you need to do. So if you are done with all this by end of Jan, maximum by the 6th of February, then you will be in good hands, because then you will have 20 days to do the final proper revision of all the strong chapters, right? That's the kind of position I want each one of you to be in, because if you do not handle this month of January well, अगर आप जनवरी का महीना ठीक से हैंडल नहीं करेंगे, देन आपको फरवरी में काफी दिक्कत होगी. That is पक्का. And I do not want any of our students to go through that kind of an experience. And if you are dealing with weakness and susti in February, trust me, it's not a good feeling at all. Okay, so I do hope this will be of help, and I wish you all the best, and the energy and the determination, and most importantly the commitment to show the world that yes, you can. Okay, thank you very much for watching.